Rhea Chakraborty's brother, Shovik, in the drug case is now under sharp focus. Another suspected drug dealer, Kaizan Ibrahim, also known as Jason, who allegedly supplied narcotics to Rhea Chakraborty's brother, Shovik, has been apprehended by the narcotics team. The two drug peddlers arrested by the Narcotics Control Bureau on Tuesday were produced in court today. Peddlers Zaid and Basit had links with Shovik. Shovik had shared Zaid's number to Sushant's staffer as well. Okay, cutting straight across to Vikas Singh, who is addressing a press conference on Sushant Singh Rajput's death. Listen in. And that is why, for the first time, this statement came yesterday about what apparently it is alleged that the family members had said. So that is the only occasion for us to know what actually had been recorded, because the objection at that point of time was only that it should not be in Marathi. Don't ask us to sign something which is in Marathi. But we were not aware. We didn't know what was written in Marathi. That has come only now when this leak has taken place by the Mumbai police to the media or to the accused. कल हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सीपी मुंबई ने शायद ये कहा कि उस समय प्रोटेस्ट नहीं किया गया कि हमने क्या लिखा है. हमारा कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ा स्पष्ट था कि हमने उस समय प्रोटेस्ट ये किया था कि ये मराठी में नहीं लिखा जाना चाहिए, और मराठी में लिखा जा रहा है तो हमसे साइन नहीं कराना चाहिए. लेकिन उस समय हमको ये नहीं मालूम था कि जो हम बोल रहे हैं उसके अलावा कुछ लिखा कुछ और जा रहा है. वो तो हमको पता कैसे चल सकता था जब हम मराठी जानते ही नहीं है, परिवार वाले जब मराठी जानते नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने भी जब हलफनामा डाला मुंबई पुलिस ने, तो उन्होंने सील्ड कवर में दिया. अगर इतनी अहम बात उनके पास उस समय थी तो सील्ड कवर में क्यों दिया? अंग्रेजी में देते, हमको भी देते, हम बताते सुप्रीम कोर्ट को कि ऐसा हमने कभी स्टेटमेंट नहीं दिया है. ये तो कल परसों जब उन्होंने कोई फ्रेंडली मीडिया को या अक्यूज्ड के थ्रू अगर जब रिलीज किया है, लीक किया है, तब हमको पहले पता चला कि हमारे मुंह पे ये सब बात लिख दी गई है मराठी में, और तब ये मौका आया कि हम डिनाई करें कि जो उस पे लिखा है वो गलत है. क्योंकि पहले हमारा ऑब्जेक्शन था कि मराठी में नहीं होना चाहिए, और कल हमारा ऑब्जेक्शन था जब ये पता चला कि गलत लिखा गया है, तो हमारा ऑब्जेक्शन था कि जो लिखा गया है वो ऐसा परिवार वालों ने नहीं कहा था. धन्यवाद. आपको कोई स्टेटमेंट की कॉपी नहीं दी गई थी उस टाइम? नहीं, कोई स्टेटमेंट की कॉपी नहीं दी गई थी. The copy of the statement was not provided to us. Thank you. Sir, there's also one question about how the owner of the building has in fact said that he has still... All right, so there you go. This is a controversy which is now arising out of the testimony which was recorded by the Mumbai police. The testimony was made to sign, allegedly, according to Vikas Singh, by Sushant's family, and this testimony was in Marathi. And that is the controversy that is breaking out at the moment. Listen in. The key of the house was given to the owner. There are still the key of the Sushant Singh Rajput's room is still missing. Well, I can't comment on anything which has come in the investigation. But if this is true, then this is a very serious matter, because then the room in which he died, it could have been accessed by somebody, and the room could have been locked again. So this is a very serious issue, but I will not comment on the veracity of this, because I don't know whether this has come or not come. ये जो कमरे की चाबी की जो बात आप पूछ रही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के कमरे की चाबी लैंडलॉर्ड को नहीं मिली, उसके बारे में मैं कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि वो एक इन्वेस्टिगेशन का मामला है और मेरे को मालूम भी नहीं कि ऐसा कोई स्टेटमेंट आया है. लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अगर ऐसी बात है तो बहुत गंभीर बात है, क्योंकि तब उसका मतलब जिस रूम में उनका सुसाइड हुआ था उसका एक्सेस किसी को था जिसकी चाबी अब अवेलेबल नहीं है. धन्यवाद. Investigations have increased. Still now the family is firm on the belief that this is not a suicide, this is a clear-cut case of murder. Well, the family is definitely having grave doubt that this is not suicide and this is murder. परिवार को बड़ा गंभीर शक है कि शायद ये सुसाइड नहीं, क्योंकि हमारा जो एफआईआर था वो अबेटमेंट टू सुसाइड था. लेकिन अब जिस तरह की बातें आ रही हैं, अब लग रहा है कि शायद ये सुसाइड नहीं, अबेटमेंट टू सुसाइड नहीं, बल्कि बहुत गंभीर अपराध शायद मर्डर का है. धन्यवाद. Does the family still believes that the evidence were tampered at the location, at the spot? I will not get into the investigation part. I think that is enough. Thank you. Thank you. Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel, and don't forget to press the bell icon to stay updated.